For breakfast, I'm having burji today. I am not going to have any pav with burji. I'm planning to completely stop pav bread and maida. So guys, welcome back to my channel. My name is Alina and अभी बज गए हैं 12 एंड राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ हमारा जो किचन का टैप है वो ख़राब हो चुका है. सो हम लोग एक टैप लेने जा रहे हैं एंड आई नीड वन रॉड. जस्ट एक लंबा जैसा रॉड आता है ना. सो आई कैन कीप माई टावल्स एंड ड्राई टावल्स बेडरूम के लिए चाहिए था. सो वी आर गोइंग फॉर दैट. उसके बाद जो है जो टीवी यूनिट के नीचे जो जो शेल्फ है, जो कपबोर्ड है, वी हैव टू क्लीन दैट. उसमें जितनी भी ग्लासेस हैं, क्रॉकरी आइटम जो है उसको क्लीन करके वो सेट करना है. तो बहुत काम है आज. हाय गाइस, हम लोग घर आ गए हैं एंड सच एन एक्सट्रीम हीट आउटसाइड. इतनी गर्मी थी. वैसे भी हमारा जो टाइमिंग था बाहर जाने का ऑल्सो वॉज नॉट राइट. वी वेंट ओनली एट 12. तो दिस टू मच ऑफ हीट. आई डोंट नो. मैं आई वाज सीइंग ऑन द रोड पीपल जो काम करते हैं एंड आई वाज फीलिंग सो पिटी यार. इतनी गर्मी में भी उन लोग जो है वो रोड डिग कर रहे हैं. तो रियली रियली बैड. मैंने ये टैप लिया है. तो मेरा टैप जो था ना उसका ये जो बोलते हैं ना अंदर का कुछ समथिंग दैट गॉट स्पॉइल्ड. सो आई टुक दिस टैप. सो ये टैप इट्स क्वाइट नाइस. लाइक जस्ट शो यू. ये लेकिन पूरा ट्विस्ट हम कर सकते हैं. इसको लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या यू जस्ट वांट टू जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेट करना है. जो भी है जैसा है आप कर सकते हो. सो ये एक टैप लिया हमने. ये मैंने एक रॉड लिया है. इफ़ यू कैन सी, ये बेडरूम में लगाने के लिए ये रॉड फॉर टावल्स एंड वैसा. फिर मैंने ये एक लिया है एशियन पेंट्स का दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑयल पेंट वाइट कलर का. इसके साथ ब्रश एंड दिस इज़ अ सैंड पेपर. तो हमारा जो देयर इज़ वन प्लांट जिसके उसके नीचे एक स्टैंड है. सो वो स्टैंड जो था ना दैट बिकॉज ऑफ रेन वो पूरा ब्राउन हो गया है. सो जो प्लांटर है, जो उसका वाज है ना नीचे का जो स्टैंड है, आई हैड टू पेंट दैट. तो इसके वजह से हमने वो ऑयल पेंट लिया है. एंड उसका भी मैं आपको बताऊंगी आफ्टर पेंटिंग हाउ इट इज़ लुकिंग. इट इज़ लुकिंग वेरी बैड एट द मोमेंट. रुको मैं आपको बताती हूँ. गाइज यू कैन सी दिस. ये भी जो है ना स्टैंड मैंने जो है अमेज़ोन से लिया था. इट वॉज़ ब्यूटिफुल. और ये बेसिकली मैं इंडोर रख रही थी बट उसको फिर हमने आउटडोर, ये घर में हम लोग ने इसको आउटडोर रखा है. एंड इफ़ यू कैन सी इसका हालत बिकॉज ऑफ रेन कैसा हो गया. सो आई एम प्लानिंग टू पेंट इट एंड वंस आई पेंटेड फिर मैं आपको बताती हूँ ये कैसा लगता है. सो लेट्स डू सम DIY एंड सी. बट आज नहीं, आई एम गोइंग टू डू इट मे बी सम अदर टाइम. So guys, we got this pomfret. We got 14 pomfret for 500. They are not very big. I mean, I think सिर्फ यही एक बड़ा है and हाँ बाकी सब all are small only. So we are just going to make fish fry and fish curry or ambote क्या making of this? We are making fish curry and fish fry. So guys, that's my food. Fish fry, pomfret. So guys, this is a cabinet that we are looking out to clean. Guys, I will open this and I will show you कि इसमें जो है ना हम लोग ने क्या क्या सामान डाला है. This is a lock so that Trevon can't open it, but it is of no use. He opens that. Okay, so I'm just showing you my glasses. I'll open this door also. Hey, बाप रे. I don't know. I hope I don't break any of the glass. Okay. You can see this. यहाँ पर भी है एंड देन नीचे भी है. सो ना इसको बस हमको क्लीन करना है. यू कैन सी देयर इज हाउ मच द डस्ट. देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट इनसाइड. सो लेट्स क्लीन दिस. चलो. Basket can be seen inside. Just show. yeah. Put little deep. So guys, you can see I have placed all the glasses here. Guys, so let's remove all the champagne and the wine glasses now. Let's keep it down. These two are my favorite glasses.
here. Again, I've kept all these in the basket. Guys, looking at these glasses might be, finding that, we we all drink, We don't drink. but we actually don't drink. We've just kept these glasses basically just for show, or if there are some guests around, and then we, like buying all these glasses. That was the only thing. I have a lot of vases, but again the problem is where to keep it. Not even where to keep it. See, if this vase was actually initially before Trevon, it was outside, but after Trevon, na, we have to keep everything inside this because he starts, taking it off, and then just afraid that it shouldn't break. This is one, I think. This is that ashtray kind of. Yeah, it's an ashtray only. Yeah, it's an ashtray. Again, if somebody is there, if anybody wants to smoke, any guests or anybody, they can use it. I think people who are fond of, collecting glasses, wine glass, champagne glass, but then, I mean, it looks nice when you have that proper, bar kind of cupboard and, thing. We don't have it, and we don't intend to, make it also, because since we don't have anyone drinking at home, so doesn't make sense to make it. I think these are vodka shots. This was also, I think, gifted. We didn't buy this. Okay, so I think on top is the vodka glasses. Yeah, it's a vodka glass. And again, you have another ashtray. Yeah. And look at the mess here. Sure, let's clean this now. तो गाइज यहाँ पर एक ग्लास है. उसके बाद you have it here. All the delicate pieces are here now. सारा wine glass and thing are here. And guys, this is the initial glasses. This is the first bag glasses that we use. ये सबको clean करना है. So guys, just with the dry cloth, I'm removing the dust right now. देखो. Can you see the dust? Get the dust. इधर भी आप देख सकते हो कितना डस्ट है. यहाँ पर भी बहुत डस्ट है गाइस. Now it is still a little better. Now for this glass, what we'll do is we are going to wipe this with Colin. Okay. Directly जो है ना, Colin यहाँ पर मारेंगे. And उसको भी एक क्लॉथ से let's wipe it. Surface. I don't see any kind of marks. Yeah, but it's there on the wood. But wood we cannot put any, any collar or anything as like that. So yeah, cupboard is cleaned for now. So guys, we have already put the tap here, but if you see, there is no pressure. There is no pressure because this particular tap needs a motor. I did not have a motor on the kitchen. I mean, on this particular what is this called, tappy. So now I have to buy a motor for this. So my earlier tap used to give me a good pressure, but he's saying if you put this kind of taps now, you actually need to put a proper motor. So now evening we need to put a motor so that we can get a good pressure. Otherwise नहीं तो पानी फिर ऐसा आएगा. ये वाले टैप में जो मेरा पहले का टैप है ना, this tap, in this kind of tap I get good pressure.
long time to shoot this vlog because पानी there's no water only. But ये clean करना ही था. It was almost very due to be cleaned. मैंने बोला यार अभी ज़्यादा और वेट नहीं करना है. It's okay. Anyways, glasses ना you don't need that much of water. Was we'll keep it behind. So guys, our cleaning for this particular cabinet is done, and you can see the glasses are looking beautiful after washing. They actually shine like diamonds now. Just giving you a closer picture. But it took us almost like, so it took almost 2 hours to cleanse the entire cabinet and then glasses. So guys, you've seen the cabinet work is done and the glasses are looking beautiful and shining at the moment. And so I think I'll have to end this vlog for now. And if you want to see such videos, do subscribe my channel. People who have already subscribed my channel, thank you so much. And people who are new to my channel, don't forget to subscribe my channel if you like this video. And I will see you again soon. Thank you. Bye bye.